Hello class 5, welcome back to my channel. As you all know that we are doing chapter large numbers and we are doing exercise 1.1. We are on exercise 1.1. We have done face value, place value, period, abacus reading, written words. We've learned everything, right? Today we are going to learn about successor and predecessor. So the topic for today's video is successor and predecessor. तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही समझाऊंगी आपको. This is next question of the exercise. Write the successor of each of the following. Write the successor of each of the following. What we have to calculate? We have to calculate the successor. Okay, like the first part is 59, 60, 73, 875. And another part is 679, 83969. So we have to calculate the successor of these two numbers. First of all, let us read the number. How do we read the number? Let's put its place value ones, tens, 100. सक्सेसर निकालने के लिए आपको प्लेस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है. मैं आपको सिर्फ इसलिए रीड करवा रही हूँ ताकि आपका पुराना रिवीजन भी साथ साथ होता रहे कि कैसे रीड करते हैं नंबर्स को. सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 10 crore. So how do we pronounce it? 59, one period together. 59 crore, 60 lakh, 73,875. Okay. Now you have to calculate the successor of this number. 60 lakh, 73,875. इसका सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर मीन्स वन नंबर आफ्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसर? वन नंबर आफ्टर. तो एक नंबर आफ्टर के लिए +1. इसके बाद क्या आएगा? जो +1 करके होगा. 5 + 1 6. अदर्स नंबर्स रिमेनिंग सेम. 7 0 6 9 5. So the successor of 59, 60, 73, 875 is 59 crore 60 lakh 73,876. One number after. Very easy. Let's do another part. This is 6 crores 79 lakh 83,969. You have to calculate its successor. To calculate the successor, you have to add 1. 9 plus 1 is 10, 0 and 1 carry. 6 plus 1 is 7, others numbers same because there is no number under them. Put commas. So the successor of 6 crore 79 lakh 83,969 is 6 crore 79 lakh 83,970. Okay. So successor is very easy. It is very easy to calculate the successor. How do we calculate successor? By adding 1 because successor is one number after. Now similarly we are going to do another question to find out the predecessor. Okay. जैसे successor होता है what comes after, वैसे ही predecessor होता है what comes before, एक नंबर पहले. Okay. So let's come to that point. Let's see another part. Write the predecessor of each of the following. Now you have to calculate the predecessor. Successor था what comes after, तो हम +1 कर रहे थे. predecessor होता है what comes before, तो हम -1 करेंगे. predecessor is what comes before. Let's see the first number. ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore.
So the number is 7,56,87,600. You have to calculate its predecessor, so you have to minus 1. Now, everyone knows how to subtract, still I'll tell you. You know that the number above should be greater. ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए. But 0 क्या है? 1 से छोटा है. So 0 will ask for help from another number. 0 बगल वाले से हेल्प मांगेगा, पर 0 तो खुद ही छोटा है, वो क्या हेल्प देगा? तो ये वाला 0 नेक्स्ट से हेल्प मांगेगा. जब ये 6 से हेल्प बन लेगा तो 6 बन जाएगा 5 और 6 1 दे देगा इसको, ये बन गया 10. तो इससे हेल्प किसने मांगी थी? 0 ने. 10 बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10. ये इसने 1 कम कर लिया ना, अपना 1 इसे दे दिया. तो 10 minus 1 is 9. 9 minus there is no number. 5 minus there is no number. There are no numbers, so the number as it is. I hope it is clear. So the predecessor of 7,56,87,600 is 7,56,87,599. What comes before? Similarly, we'll do another part. This is 45,26,99,990. You have to find out its predecessor. To find out the predecessor, you have to minus 1. You have to subtract 1. When you subtract 1 from the 0, it is not possible. So 0 will take help from 9. 9 will become 8 and give its 1 to 0. This will become 10. 10 minus 1 is 9. 8 minus 0 is 8. 9. Because there are no numbers, so the numbers will come as it is. Put commas 3, 2, 2. So the predecessor of 45 crores 26,99,990 is 45 crore 26,99,989. This is the predecessor of this number. So this is very easy. To find out the successor, you have to add 1, and to find out the predecessor, you have to subtract 1, because successor is what comes after and predecessor is what comes before. Now let us start a differentiation between Indian system and international system. Indian system of numeration किसे कहते हैं और international system of numeration किसे कहते हैं? Let's have an introduction of it, and the questions related to it we will do later on in the next video. Okay? So let's start another topic. अब आपने सुना होगा कि एक नंबर को वर्ड्स में लिखने के 2 तरीके होते हैं, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है सबको. So that I am going to clear in a very easy way कि कैसे करते हैं. Suppose a number is, एक नंबर लेते हैं, नंबर इज 8563128330. दिस इज द नंबर. अब इन दो नंबर, इस नंबर को मैं दोनों वे में लिख के दिखाऊंगी, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम. See beta, when we are talking about Indian system, first let us write the place value. Let's start from ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crores and 10 crores. This is the place value of Indian system. Okay, ones, tens and 100 make one period ones. 1000 and 10,000 make one period 1000. Lakh and 10 lakh make one period lakh, and crore and 10 crore make one period crore. Let's put the value from the one side. Ones की जगह पे है 0, tens की जगह पे है 3, then 8, then 2,
then 1, then 3, always start from this side, not from this side, 6, 5 and 8. जहां जहां पे पीरियड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहां वहां पे हम कॉमा लगाएंगे. मीन्स यहाँ पे ये दोनों एक पीरियड है, यहाँ पे ये दोनों एक पीरियड है, यहाँ पे. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 1s, 3 is 10s, 8 is 100, 2 is 1000, 1 is 10,000, 3 is lakh, 6 की प्लेस वैल्यू 10 लाख, 5 की प्लेस वैल्यू करोड़ और 8 की प्लेस वैल्यू 10 करोड़. ठीक है, ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो हम पढ़ते हैं. अब इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे. यहाँ पे आपने डिवीजन देखा, पीरियड कैसे है, पहले 3 का डिफरेंस, फिर 2, फिर 2. पहले 3 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिवीजन है. लेट्स कम टू इंटरनेशनल सिस्टम. आई एम राइटिंग द नंबर है 0, 3, 8. स्टार्ट फ्रॉम वन साइड ऑलवेज. 2, देन 1, 3, 6, 5 and 8. This is the number. अब इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से स्टार्टिंग सेम होगी 1s, 10s, 100. सेम 1000, 10,000 सेम, बट लाख नहीं होता इसमें. लाख की जगह होगा 100,000. ओके, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000. उसके बाद आएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. ओके, 1s, 10s, 100 बनेंगे एक पीरियड. 1s, 1000, 10,000, 100,000 बनेंगे एक पीरियड. 1000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन बनेंगे एक पीरियड. मिलियन. अब यहां पे आप देखो जो पीरियड का डिवीजन है वो 3 के गैप में है. वहां पे कैसा था 3, 2, 2, 2. यहां पे कैसे है 3, 3, 3. So 1, 2, 3, comma 1, 2, 3, comma 1, 2, 3. And how do we pronounce it? बोलेंगे कैसे 856 मिलियन. पूरा नंबर एक साथ बोलेंगे 856 मिलियन 312,830. Very easy. 856 million 312,830. Place value of 0 is 1s, 3 की place value 10s, 8 की place value 100, 2 की place value 1000, 1 की place value 10,000, 3 की place value 100,000, 6 की place value million, 5 की place value 10 million and 8 की place value 100 million. It means there is 10,000 के बाद चेंज हो जाता है, लाख और करोड़ नहीं आता. 10,000 के बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. I hope this is clear to everyone. Now we have understood the basic of Indian system and international system. This is the Indian system of numeration and this is the international system of numeration. Now questions related to this same we will be doing in the next class. इसी से related, international systems related कुछ questions करेंगे हम next class में. And if you want to be updated and you want to see all the videos of class wise, syllabus wise, topic wise, then you need to go and subscribe the channel so that you can get a notification every time I post a new video. So go and subscribe and keep practicing, students. Bye bye.